Yeah, Aman will tell. Aman will tell. Aman Akhtar. सर स्विच को फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके, अमन अख्तर है क्या? अमन अख्तर है क्या? अमन अख्तर। ओके, स्टूडेंट इज absent. ओके, आई विल नहीं मार्क सर, absent. तो है वॉइस क्या? सर है, देखिए, सर है अमन जी है, नहीं है बट वो। पता नहीं उसका नहीं है, कहाँ पे है वो? कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक कुमार नहीं पूछा मैंने, यस अमन सर अख्तर पूछा। 250। यस नहीं नहीं, मैंने जी वो अभिषेक कुमार नहीं पूछा, अमन अख्तर पूछा है। ठीक है, शायद से नहीं है वो। ओके, तो मॉस्फेट एज अ स्पीच हमको रिपीट करना है क्या? ठीक है, ओके। तो आई विल रिपीट दैट मॉस्फेट एज अ स्पीच. ओके, so in region of operation itself I will explain MOSFET as a switch. ये जो रीजन ऑफ ऑपरेशन, और मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने जो लिया वो मैंने पीपीटी पे लिया, और वो पीपीटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 1 की थी, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ये वाली पीपीटी थी वो, यहाँ पे मैंने मॉस्फेट एज अ स्विच लिया है। सो इज इट विजिबल नाउ पीपीटी? हेलो, am I audible to you or यस not? सर विजुअल। Yes, sir. यस सर ऑडियो। So in region of operation, in drain characteristic we have three. This, the shaded region that I am used, this shaded, this selected region here is a cutoff region. So this cutoff region में MOSFET acts as an open switch. So somebody has told me to repeat a MOSFET as a switch. MOSFET as a switch मतलब सिंपल चीज है। MOSFET के इनपुट टर्मिनल को, मतलब गेट टर्मिनल को, आपको डीसी वोल्ट अप्लाई करना है, मगर वो किस तरीके से अप्लाई करना है? सो इफ योर गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, that is, it is directly connected to source terminal in CS MOSFET CS switch, then your VGS is 0, and once VGS is 0, your ID is 0. So if your MOSFET means I'm talking about now this part, means ये उसका equivalent circuit ये रहेगा, this will be the equivalent circuit. This is called open switch. If VGS is 0, your MOSFET will act as an open switch, because in mode 1 of MOSFET working principle, when VGS is 0, channel has not induced yet, so ID has no path to flow, so ID is 0. So drain current is 0 means it acts as an open switch, circuit will not complete. So that is MOSFET as a open switch. When this gate terminal is connected to directly drain, that is plus VDD 5 volt, then VGS is positive. And we know in N-channel enhancement MOSFET, when VGS is positive and it is connected to 5 volts, see here, generally VGS given is a small signal, low frequency analog input. Then and then your MOSFET will maintain in saturation region, acts as an amplifier. This region is called as constant current source region. उसको और एक नाम दिया है linear region. When your MOSFET will operate in linear region when input is small signal. ऐसा नहीं है कि अगर MOSFET एम्पलीफाई कर रहा है, अगर एम्पलीफायर का गेन 10 है, 10 का मतलब इनपुट अगर 100 मिली वोल्ट है तो उसका आउटपुट 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 मिली वोल्ट इज 10, दैट इज नथिंग बट गेन.
तो आप बोलोगे कि अच्छा है तो एम्पलीफायर का गेन 10 है क्या, तो इनपुट 10 वोल्ट दो 10, तो आउटपुट 100 वोल्ट आएगा, तो बढ़ गया ना, एम्पलीफिकेशन हो गया ना। तो ऐसा नहीं रहता है। So to maintain your MOSFET in linear region of operation, we need to give certain small signal. Then and then the output will not be distorted or clipped. If your input is 5 volt, output is going to be clipped because it is go beyond saturation region in ohmic region, and your output will get clipped in either positive or negative half cycle or get distorted. And that is why your input to make your MOSFET as amplifier, input should be linear region upwards. That is small signal like 100 millivolt, 80 millivolt, 20 millivolt. What will happen if this 5 volt is directly given DC voltage? Then your output will be in ohmic region and it acts as a closed switch. Closed switch मतलब उसके through current flow होगा, but it will not act as amplifier. It will act just as a switch. वो circuit बनाएगा. That is a closed switch. So closed switch will be like this. So this is a closed switch where VGS is more than VT, and your input voltage is the DC voltage, which is say 5 volt or 10 volt. जो क्यों भी DC voltage है 5 volt. Then it will act as a closed switch, and this will be your equivalent circuit. So this is what just a MOSFET as a switch. So MOSFET as a switch can be easily seen by this transfer characteristic up to VT closed. After VT, up to VT, the MOSFET is off, means open switch, and after VT, MOSFET is on, means it is a closed switch. So this is what MOSFET as a switch that I want to explain. That has been covered. So that was the question. किसी ने पूछा था कि MOSFET as a switch पढ़ाओ. ठीक. Any other? Hello. Nothing. So what next? We have also completed, I think, amplifier also. Amplifier part is also completed by me. I think I have shown this amplifier part. MOSFET as an amplifier. The very primitive part that has been taken by me. पहले मैंने ये बताया कि उसके लिए कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों यूज होता है, क्योंकि वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस आर फेवरेबल इन कंडीशन in case of common source as compared to common gate and common drain, and that is why common source configuration is widely used as an amplifier, especially wideband audio signal amplifier. और ये इसकी डायग्राम थी, सिंगल स्टेज MOSFET CS एम्पलीफायर, जिसमें हर एक सर्किट में जो हर एक कंपोनेंट्स उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा है. RD is going to control ID, drain current. R1 and R2 is going to provide the biasing resistor, okay, to establish biasing, that is to obtain the VGS, क्योंकि VGS obtain करने का काम R1 and R2 करेगा. ओके, कैसे? क्योंकि पहले वो VG क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको नाम दिया है वोल्टेज डिवाइडर बायस. ये भी मैंने थोड़ा सरफेस लेवल पे लिया आपको, क्योंकि वो यहाँ पे इस नोड पे, यहाँ पे जो नोड दिखाई दे रहा है, मैंने जो शेडेड पार्ट लिया है इस सर्किट में, उसको बोला जाता है गेट वोल्टेज. और उस गेट वोल्टेज, इस गेट वोल्टेज को आपका कुछ तो वोल्टेज मिलेगा, एंड द वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज गिवन बाय द फॉर्मूला R2 upon R1 plus R2 into VDD. It is called as voltage divider formula, VG. VG is equal to R2 upon R1 plus R2 into VDD. इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन. ये वोल्टेज डिवाइड करने का काम करता है. जब सबसे पहले मैंने लेक्चर लिया था एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, तब मैंने बोला था कि रेजिस्टर नॉट ओनली लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, not only used as a load but also used as a voltage divisor in particular circuits. तो इसमें वो हो रहा है, इसमें ये रेजिस्टर वो काम करता है. It makes voltage division at that particular shaded node. VG is R2 upon R1 plus R2 into VDD. R2, R1, VDD are fixed value of voltage. That means VG is fixed voltage. Then you can apply KVL यहाँ से across this gate to source voltage towards this RS equal to 0. तो ये KVL अगर आपने अप्लाई किया, KVL सबको मालूम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो हमेशा जिस जगह पे अप्लाई किया जाता है कि जहाँ पे लूप है,
मतलब जहां से आपका करंट फ्लो हो रहा है वहां पे वो टर्मिनेट हो रहा है. सो वीजी माइनस आईडीआरएस माइनस वीजीएस इज 0. तो एक्चुअली ये वीजी जो है वो वीजीएस डेवलप करता है, वीजीएस एस्टेब्लिश करता है, and that is why it is called as biasing resistor. That is why these R1 and R2 are called as biasing resistor. This is the significance of R1 and R2. Next is RS is going to provide a negative feedback. तो ये आप इतना ही समझो इस लेवल पे कि RS is going to provide negative feedback, and negative feedback stabilize the circuit, means your output voltage as it is amplified, but it is controlled amplified output voltage. ऐसा नहीं कि कोई भी amplification देके वो uncontrollable होगा, no. So RS gives you negative feedback in the circuit and it provides the stability of the circuit. That is the role of RS. इसलिए RS को रिमूव नहीं किया गया है. अगर RS के थ्रू करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हमने इन प्रीवियस लेक्चर पढ़ा. तो RS को बाईपास किया है बट RS को रिमूव नहीं किया है, एंड RS को बाईपास किया है CS से, because we do not want the current flow through RS, because if the current flow through RS then IDRS voltage drop takes place, that we don't want. That is why CS is used across this, because उसका reactance इतना कम है कि signal will prefer CS path to flow, it will not prefer RS path to flow. So RS will get bypassed, इसलिए CS यहाँ पे लगाया है. CS लगाने से आपका amplification बढ़ता है. CS अगर remove किया amplification reduce होगा. Okay, so that contradicts the definition of MOSFET as an amplifier. इसलिए CS लगाना ही चाहिए. CC1 and CC2 are the capacitor which is exclusively provide or AC signal towards input and output, and it blocks DC part in this circuit. Okay, and they are electrolytic capacitor and they possess this property. They block DC part and they provide exclusive AC signal towards gate and towards drain. So output voltage will be always in linear region of operation, that is in saturation region, and acts as an amplifier. Okay, this Vs is the AC voltage जो small signal AC voltage दिया जाता है, generally 100 millivolt 1 kilohertz sinusoidal waveform. वो waveform generator से, मतलब signal generator से जो lab में रहता है उससे वो produce होता है उस type का signal, और उस type का signal को यहाँ पे Vs मतलब source voltage से नाम से जाना जा रहा है. VDD का मतलब है एक सप्लाई वोल्टेज है, पावर सप्लाई. जो मेरे लैब में पावर सप्लाई रहता है वहां से वो पावर सप्लाई में उसको देता हूँ, जनरली 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट, डिपेंड्स ऑन द रेटिंग दैट यू यूज्ड टू गिव. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिंगल स्टेज का मतलब है, मीनिंग ऑफ सिंगल स्टेज मींस a single n channel enhancement MOSFET that I am using here. Okay, and then I am observing output voltage on CRO. So it is observed that if input is a weak signal, output is amplified signal. Okay, तो यहाँ पे स्केलिंग दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा कि सर इनपुट इतना ही है तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड भी उतना ही दिख रहा है. अगर आउटपुट ये सब ये सिंबॉलिक है, यहाँ पे एक्चुअली एम्पलीफिकेशन बढ़ता है. ओके, एम्पलीफिकेशन बढ़ता है एंड इट इज अ फेज शिफ्टेड. So your input and output is phase shifted by 180 degree, and this is common observation in common source configuration जो हमने पढ़ा है. So this is what generally single stage MOSFET CS amplifier having its input and output waveform. Okay, और इसको नाम दिया है सिंगल स्टेज MOSFET CS amplifier with bypassed RS. इसको RS bypassed किया है with the help of CS. So this is the significance of each component प्रेजेंट इन द सर्किट डायग्राम ऑफ MOSFET CS एम्पलीफायर. ये आपको पता होना चाहिए. तो इस सिलेबस में आपको जनरली जो टॉपिक यहाँ पे दिया है इसके ऊपर थियरी तो है नहीं, होने नहीं वाला है, तो क्लियर है. तो ऑनलाइन में क्या पूछने वाले, ऑनलाइन में यही पूछने वाले हैं कि रोल ऑफ ईच कंपोनेंट यूज्ड इन कंप्लीट सर्किट डायग्राम. सो दैट इज बेसिकली एक्सपेक्टेड टू आस्क. देन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म में फेज शिफ्ट 180 डिग्री का है CS में, वो आपको पूछेंगे क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट फेज शिफ्ट बिटवीन in common source configuration is 0 degree, 90 degree, 180 degree, none of above. So this type of questions will be there in your online examination. And even your roles of each component that we also asked in this topic, that is a MOSFET as amplifier. So इसलिए ये टॉपिक ऐसे इस तरीके से
So that circuit diagram that I have already explained you, MOSFET as an amplifier, and this was the circuit diagram that has been explained. So ये अपना last topic था. कोई doubt है इससे में? No doubt? Hello? No, sir. Okay, very good. Okay. Where are the PPTs? PPT चले गए. Oh. ठीक है, एक मिनट. उसके बाद मुझे ये लेना है. इसका फर्स्ट टॉपिक लेना है मुझे. Now next topic is a new device that I am going to touch in the syllabus. I will just share the syllabus again because वो बंद हो गया automatically. Is it visible? Yes. Now we are coming to another type of device under unit number 2. Name is operational amplifier. So this unit is divided into two parts: transistor and op amp. So if you see this, basically a 30 40. So this is the weightage generally, if you observe, for this operational amplifier. So we'll see what is basically operational amplifier, what it constitute, and how it come in existence. Okay. So let me tell you, operational amplifier is a combination of large number of BJTs, then many number of resistors and capacitor. And if you observe the actual operational amplifier diagram, then it will be a big one. Let me check whether I have this operational amplifier data sheet with me or not, so that you will come to know. Let me see operational amplifier data sheet. Yes, I have. So now you come to know what is basically operational amplifier and how it basically constitute. Right. So this is basically an operational amplifier. So this is the complete circuit diagram of operational amplifier. So you will say, "Are itna bada hai?" Yes. So it consists of large number of BJTs. It is shown by this Q. Q means a notation used for transistor BJT. Some are NPN, some are PNP. Okay, this is especially NPN and this is especially PNP. Okay, this is also especially PNP. Then some are resistor, some are diode, some are capacitor. So this is basically combination of active and passive component. So truly it is a passive active component, that is operational amplifier. So how you will configure this number of transistors and passive components? How every time all these things? No, it is not possible. Then what is the solution? The solution is we have to accommodate all these numbers of transistors and passive component on a very small area on a single semiconductor device. We have to shrink down the mechanical dimensions of all that, and we accommodate all these things with the help of VLSI technology called very large scale integration. And then we come into existence a picture called integrated circuits. So we will make one integrated circuit through which all such type of components will be available, and it is made available to the user, for example, like us, user like us. And now we can use these number of actually
transistors, diodes, and some passive components so that it makes a complete circuit. So that is called as integrated circuit, called IC. So IC is a very popular word and buzzword in electronics engineering. 1 minute, let me show this PPT. But why this PPT is not working? I don't know. This is important PPT because I want to show anyhow to you. Yes. So in 1948, actually op-amp was used with the help of vacuum tubes, not a transistor, vacuum tubes, and which was very popular because it is used in analog computer to perform variety of mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, and that is why it is called as operational amplifier. So different types of analog signal operation can be done with the help of this type of device, but it is using vacuum tube. But after this, at a Fairchild laboratory, Robert Widlar, who is the great inventor to invent this operational amplifier with the help of BJTs, and they have shrink down all these mechanical dimensions and passive components and make one single IC. Is a chip he has made named IC741, called as op-amp IC, IC74 op-amp IC. And this is the currently how it look like. Now I think is this visible to you, all of you, this slide? Yes, sir. So this is nowadays how it look like. This is the IC where it has 8 pin. So this blackish part is basically the cover, that is nothing but enclosure, and under this we have semiconducting material. And now this semiconducting material consists of these number of transistors and passive components, and there are only 8 terminals, or we call it as a pins, because IC has pins, 4 in left hand side and 4 in right hand side. So this is what the pin configuration of this IC. So this is pin number 1, pin number 2, pin number 3, pin number 4, pin number 5, pin number 6, pin number 7, pin number 8. And this is what the symbol of this operational amplifier. And this has been given by Robert Widlar, was a is a very notified inventor and electronics engineer at the time of 1950 and 1960 onward. Okay, so due to this only, these big computers, the first computer that has been invented was a room size, complete one room size, because it uses vacuum tubes and other electronic components where their sizes is concerned. But now this IC has low cost and small size. Why low cost? Because the manufacturing of this IC has been done in a particular second. We have certain hundreds of such type of ICs now has been manufactured, and that is why the cost is less, because the productivity of this type of IC is more, and hence cost is less. Then flexibility and versatility is the property of this op-amp that will be discussed. Again, this will be discussed. ये जो 2-3 चीजें ना, ये थोड़े डीप में मैंने सेकंड ईयर के लिए ये पीपीटी बनाई है. This is not for you. This is for second year. And in real time application, this operational, जैसे हमने पढ़ा कि MOSFET डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज होता है. ओके, लॉजिक गेट्स वगैरह बनाने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स के मदरबोर्ड में यूज होता है. और बीजेटी जैसे ट्रांजिस्टर में यूज होता था, बाद में लाउड स्पीकर में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज हो रहा है, और अलग अलग मिक्सर्स में, मतलब मिक्सर मींस साउंड मिक्सर, टॉकिंग, तो ये वहां पे वो यूज होता है. इन सिमिलर फैशन, what is the general real life application of op-amp? So op-amp is used in first of all process control, big process plant where op-amps are very popular.
After that, it is used in communications, that is different communication engineering modulations. Then it is used in computers also. Then power and signal sources, displays and measurement instruments, that is electronic measuring instruments. Okay, for testing and calibration purpose, op amps are very popular. So these are the general real life applications where op amps are used. So op amp has basically 8 terminal, but this is a symbol of op amp where it has 2 input terminal, and the name of 2 input terminals are inverting input terminal, that is pin number 2, which is basically having sign negative, and hence it is called inverting. And second is a non-inverting input terminal, pin number 3, having sign positive. तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दो साइन उसकी है, इसलिए उसको निगेटिव एंड पॉजिटिव, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से उसको बोला गया है. तो ये इनपुट टर्मिनल है उसके, मतलब डेफिनेटली ये दो अलग अलग इनपुट सिग्नल को लेता है और सिर्फ एक ही सिग्नल को आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है. दैट इज नथिंग बट आउटपुट टर्मिनल. ये आपका पिन नंबर 6 है यहाँ पे. मगर उसके ऑपरेशंस के लिए आपको सप्लाई वोल्टेज देने की जरूरत है. As there are large number of BJTs used, so it uses dual supply. मतलब उसको पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज देना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज भी देना पड़ता है, that is at pin number 7, और उसको नेगेटिव वोल्टेज भी देना पड़ता है, that is at pin number 4. Okay, and pin number 1 is generally offset null. इसका ये मतलब है pin number 1 and pin number 5. Hello, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Pin number 1 and pin number 5 is offset null. इसका मतलब ये है कि आइडियली अगर मैंने इनपुट कुछ दिया ही नहीं है, अगर मैंने आइडियली कुछ इनपुट दिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ सप्लाई वोल्टेज दिया है, my output voltage should ideally be 0. This is very interesting concept. Ideally, you are not given any input to input terminal, that is pin number 2 and pin number 3, but you have just given supply voltage. Pin number 6 should not have any output, but due to thermionic emission of supply voltage, some very small amount of electron flow through this device due to thermionic emission, and at output we produce a certain noise voltage, and hence your output is not 0, output is a certain non-zero value, and that voltage is called as offset voltage. So we have to, ideally there should not be any output voltage, so we have to nullify that output voltage. Nullify means we have to discard that value, that noise voltage, and for that pin number 1 and pin number 5 is used. So these are the significance of each pin. And pin number 8 is not used up till. So Robert Widlar has envisioned that if is there any further enhancement in this particular ICs, then some pins may be required in future, but up till pin number 8 has not been used as far as the operational amplifier application and working principle is concerned. Okay, so this is what the total pin configuration of op amp. This is a symbol. This is the real life application of op amp, and this is what a complete summary related with what op amp is. Very first topic is the functional block diagram of operational amplifier. This is the very first what we can say topic of our today's lecture. So the block diagram of operational amplifier constitute 4 stages. So is it visible? Yes, sir. So it consists of, हाँ ये generally online examination के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन अभी क्या पूछेंगे, that is again a question. और इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कमेंट्स यहाँ पे किए हैं, तो so that it can be asked for online exam. Okay, so op amp has 4 stages: input stage, intermediate stage, buffer and level shifting stage, and output stage. So input stage, if you observe carefully, it has 2 input. 2 input है उसको, और वो 2 output भी देता है. 2 इनपुट लेता है, 2 आउटपुट लेता है, इसीलिए उसका नाम दिया है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट. बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब कितने इनपुट लिए उसने? 2 डुअल इनपुट, और आउटपुट भी उसने बैलेंस मतलब उसी नंबर में देने चाहिए, दैट इज नथिंग बट 2. सो डुअल इनपुट
डुअल आउटपुट भी बोल सकते हैं, मगर उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है इन द community of electronics, especially analog electronics, because op amp is the basic building block of analog electronics. जैसे MOSFET and CMOS is the basic building block of digital electronics. वैसे op amp play a vital role. It does various types of operations on the analog signal, and that is why it is very popular in analog electronics. So it input stage uses two input, that is non-inverting terminal negative and inverting terminal non-inverting terminal positive, non-inverting terminal positive and inverting terminal negative. तो पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3 से इनपुट देता है लेता है वो इनपुट स्टेज, और आउटपुट भी दो स्टेज मतलब दो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके देता है, इसलिए उसका नाम है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर. तो वो है क्या? डिफरेंशियल एम्पलीफायर मींस व्हाट? इट compares the two signal, that it takes the difference between the two signal and proportionally output voltage will be given to the intermediate stage. तो intermediate stage का input ये input stage का output है. So what are its features? It has great feature like it has high input impedance, मतलब उसका input resistance बहुत ज्यादा है. Okay. Second, it has low output impedance, इसका output impedance कम है. Okay. Then it amplifies the difference between two input signals. How it amplifies? Because it uses BJTs. So all BJT uses. So BJT का काम ही है कि amplification करना. तो input stage में भी वही है, इसलिए वो amplify करता है signal. But it amplifies the difference of the two signal. That is inverting terminal को जो signal मिल रहा है वो, और non-inverting terminal को जो signal मिल रहा है वो दोनों का difference करके output देता है. Okay, but output भी वो दो देते हैं. What is intermediate stage? Intermediate stage is very interesting. It takes two input but gives only one output. Okay, so basically intermediate stage is called as dual input unbalanced output. आपको यही आएगा एग्जाम में. At surface level अगर पूछा गया तो DIBO is which stage? Is basically input stage. तो ऑप्शन रहेंगे input, intermediate, buffer, level shifting. Your answer should be input. Then BIUO, that is dual input unbalanced output. Unbalanced का मतलब है कि दो इनपुट तो ले रहा है मगर एक ही आउटपुट ले रहा है, तो एक ही आउटपुट देना मतलब unbalanced output. So dual input unbalanced output differential amplifier, it gives you single-ended output. But what basically intermediate stage consists of? The intermediate stage consists of various BJT based amplifier. BJT based amplifier that is called as multi-stage amplifier. So basically what is the need of that? आपको क्यों दो तीन स्टेजेस के, सिंगल स्टेज का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक बीजेटी है और उसके सराउंडिंग में कुछ रेजिस्टर्स है, कुछ कैपेसिटर है, और वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम करता है एम्पलीफायर. वो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेज. मल्टी स्टेज का मतलब सिंगल स्टेज का आउटपुट दूसरे के इनपुट स्टेज एम्पलीफायर के स्टेज को लगाना, फिर दूसरे का एम्पलीफायर स्टेज का आउटपुट तीसरे के आउटपुट को लगाना, मतलब एक चेन बनाना, उसको बोला जाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. उससे एक ही चीज हासिल होती है, एंड दैट इज नथिंग बट द इम्प्रूवाइज द गेन ऑफ एम्पलीफायर, वो भी एट सर्टेन लिमिट. मगर वोल्टेज गेन इज इम्प्रूव्ड is the only motto behind intermediate stage. Third is important, that is nothing but a buffer and level shifting stage. So basically level shifting stage जो मैंने MOSFET में भी आपको बताया था, in case of MOSFET जैसे कि आप इनपुट सिग्नल देते हो तो उसमें से वो रेफरेंस जो लाइन रहती है वो 0th रेफरेंस पे रहती है, पर अननेसेसरीली वो भी आपका मतलब वो भी जो 0 रेफरेंस लाइन है उसको हम बोलते हैं डीसी कंपोनेंट, और जो अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल रहता है उसको हम बोलते हैं एसी कंपोनेंट. सो अननेसेसरीली दैट डीसी कंपोनेंट डिड नॉट गेट एम्पलीफाइड बिकॉज यू आर यूजिंग सप्लाई वोल्टेज ऑल्सो. ओके, क्योंकि आप दो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ BJTs used. So that may increase the DC level, and that makes your transistors into
ohmic region and acts as a switch. So that contradicts the definition of operational amplifier, and that is why the buffer and level shifting stage. So level shifting stage will convert or bring this DC level down towards ground potential or zeroth reference line, and that is why it is used in after intermediate stage only. तो आप बोलोगे कि सर इनपुट स्टेज के बारे में बात भी कर सकते थे ना. अगर इंटरमीडिएट स्टेज में कैसा होता है कि गेन बढ़ती है, तो गेन बढ़ती है मतलब वोल्टेज में एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों बढ़ता है. तो डीसी कंपोनेंट आपको बढ़ना नहीं चाहिए, एसी कंपोनेंट बढ़ा तो टेंशन नहीं. तो दैट डीसी कंपोनेंट दैट मेक यू ब्रिंग टुवर्ड्स द जीरोथ ground potential or zeroth reference line, use level shifting stage. Okay, so that is very, very important. And also we need high current also, because not only that is the beauty of operational amplifier. BJT, your current gain, voltage gain is good, but current handling capacity is as less as compared to op amp. So for example, BJT का current at most output में एक तो 1 एम्पियर तक एटमोस्ट रहेगा, मगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वी कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ बफर शिफ्टिंग स्टेज. सो इट यूजेस एमिटर फॉलोअर सर्किट व्हिच प्रोवाइड हाई इनपुट इंपेडेंस, अवॉइड लोडिंग इफेक्ट, दैट इज ऑफ हाई वोल्टेज गेन स्टेज जो रहती है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज में आपका वोल्टेज गेन बढ़ता है मगर उसका इंपेडेंस भी अच्छा रहता है. तो वो इम्पीडेंस आउटपुट इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट का इम्पीडेंस और बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज के इनपुट का इम्पीडेंस मिसमैच रहता है. सो टू मैच दिस, बिकॉज व्हाई मैच क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज ओनली डन व्हेन देयर इज अ प्रॉपर मैचिंग, देन एंड देन ओनली, एंड दैट इज व्हाई इंटरमीडिएट स्टेज के बाद बफर शिफ्टिंग स्टेज यहाँ पे यूज की गई है. ओके, so that uses emitter follower circuit. And lastly we are using output stage, so where we require high current, high voltage and high power handling capacity. It is not possible with the help of only alone BJT, and that is why it uses push pull complementary symmetry amplifier जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सर्किट में. यहाँ से आपको समझ में आएगा what do you mean. Now I will come to know, or I will give you the meaning of this, what push pull complementary symmetry amplifier. तो push pull complementary symmetry amplifier means this, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे NPN है, यहाँ पे NPN है, यहाँ पे PNP है, यहाँ पे PNP. so this complete stage यहाँ पे जो दिख रही है, this shaded region, this basically is nothing but push pull amplifier. Is basically push pull amplifier. It enhances the current and voltage handling capacity of that particular device. That is nothing but op amp. Okay, so आपका output voltage swing भी high रहता है, current supplying capacity भी high रहती है, and it is widely used as different type of application, like various mathematical operation it can perform: addition, subtraction, differentiation, then integration, waveform generation, even comparator, like comparing the two different signal which come from two different part of the device and is given to the input to this, and it gives you exact output comparison with the help of certain reference threshold. So this is ultimately so this is just a surface level knowledge that you must know, क्योंकि इसमें थोड़ी बाकी की चीज भी ऐड की गई है, बट ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 4 स्टेज है: इनपुट, इंटरमीडिएट, बफर एंड लेवल शिफ्टिंग एंड आउटपुट. दैट इज सफिशिएंट. So this is what we are talking about. Yes, sir. Functional block diagram of op amp. This is just a functional block diagram of op amp. I have notes also. In notes इसमें ज्यादा चीजें नहीं मेंशन की. देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मेंशन की है, ज्यादा चीजें नहीं मेंशन की है. सिंपल यहाँ पे लिखा है कि कौन से यहाँ पे तो मैंने ये भी लिखा है कि क्लास और क्लास ए बी, ये भी जरूरत नहीं आपको मालूम होने की. एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स के अलग 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 पुश पुल एम्पलीफायर्स रहते हैं. तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, डिपेंडिंग ऑन द इफिशियंसी ऑफ द पावर, आउटपुट पावर हैंडलिंग की जो इफिशियंसी उसके ऊपर उसके क्लासेस है. सो क्लास बी और क्लास ए बी हैज हाई
power handling efficiency, and that is why it is used complementary symmetry. तो आउटपुट वोल्टेज भी ज्यादा रहता है, उसके बाद आउटपुट करंट भी ज्यादा रहता है. ओके, so even very important observation is it has inbuilt short circuit protection, इसलिए diodes यूज किए गए हैं. यहाँ पे डायोड यूज किया गया है रिवर्स बायस्ड में, because current will never flow from anode this cathode to anode, and it will get definitely protected. But इतना डीप में आपने को जाने की जरूरत है नहीं, इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज जनरली एट आउटपुट पार्ट. यहाँ पे जो आउटपुट पार्ट दिख रहा है वहां पे आपको दिखाई देगा कि डायोड्स वगैरह भी यूज किए गए, ये प्रोटेक्शंस के लिए यूज किए गए. ठीक है, और सबसे अहमियत बात इसकी ये है कि इसका पावर डिसिपेशन बहुत कम है. दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर, अगर मैंने ये सिंगल बीजीटीज बना के अगर मैंने ऑप एम्प यूज किया होता, देन वो तो कॉम्प्लेक्स भी रहता मगर उसकी पावर हैंडलिंग, पावर भी इसका कंसर्न रहता. बट विद द हेल्प ऑफ दिस आईसीज, as it is a small geometry, it requires less power, and that is why power dissipation is a basic major concern which is low in IC based op amp. In IC based op amp, the dissipation of power is less. So this is what the functional block diagram of operational amplifier, that is the topic which is mentioned in this part. Then next here we have ideal operational amplifier. मतलब आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक रहनी चाहिए. आइडियली इट हैज सर्टेन पैरामीटर. ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज सर्टेन परफॉर्मेंस पैरामीटर. सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक ओनली ऑन आइडियल ऑप एम्प. सिर्फ आइडियल ऑप एम्प के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो पैरामीटर्स है उसमें आइडियल ऑप एम्प के जो पैरामीटर उसकी बहुत बड़ी अहमियत है. एंड एज फार एज ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज कंसर्न, दिस इज द 7 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि इन डिपार्टमेंटल लेवल वी आल्सो यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन टू स्टूडेंट, स्पेशली द स्टूडेंट, कि भाई ये जो पैरामीटर है इसकी आइडियल वैल्यू कितनी है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना है, इनपुट बायस करंट कितना है, इनपुट ऑफसेट करंट कितना है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कितना है, देन स्लू रेट कितना है, देन व्हाट इज पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो आइडियली फॉर ऑप एम्प, मतलब उसकी वैल्यू पूछते हैं वो लोग. सो दिस विल बी आल्सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो इसका एक चार्ट आप बना लो, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल इन अ टैबुलर फॉर्म की एक जगह पैरामीटर और दूसरी जगह पे उसकी आइडियल वैल्यूज है. सो दैट क्वेश्चंस विल बी अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर MCQ एग्जाम. ठीक है, so that will be discussed in next lecture. मैं टेबल बना के ही लेके आता हूँ तो कैसे वो बहुत अच्छा रहेगा. और मीनवाइल एक एक पैरामीटर को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है आइडियली. दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, am I clear to you? Yes, so I think I am clear with this. ठीक है.